diversified set of creditors, but the problem is right now, with what the global situation is, it's harder to get higher level of inflows from outside. Towards this end, the caretaker government has initiated the process of restructuring Pakistan's tax administration. This is a homegrown package. I know there have been heaps of studies done by the World Bank, by Asian Development Bank, some of our experts from Pakistan, but unfortunately these never were deployed in the transformation process. So we have launched a homegrown with the support of good tax experts from Pakistan sitting with the FBR. Ownership is what drives results, in my view. The digital transformation of tax administration is a critical step to meet the objectives of enhanced tax collection and improved compliance. Innovative digital technologies need to be implemented to minimize tax gaps, increase tax collections, and reduce the share of shadow economy. So we have produced an FBR restructuring plan to enhance revenue mobilization from 9.5% of GDP to a minimum of 15% in the first phase, and rationalizing tax regime to be pro-growth. Our leadership wants this to be fast-tracked. We are working towards the separation of the tax policy and tax administration functions so as to remove the apparent conflict of interest in tax collection, but also to streamline the incentive framework for our industry that suffers because of unhealthy taxes that may have been imposed in a rush to raise revenues. Similarly, customs is being reformed to separate tax policy from the collection functions if possible. But at this time, we are trying to see if we could get the customs to become more focused on trade facilitation as well as anti-smuggling, which is a major evil in across our borders. Tax policy has to be designed to be fair, equitable, and productive. The revenue and fairness objectives need to be pursued by expanding the tax base, reducing tax exemptions, and through a more efficient digital tax administration. There are multiple agencies that will be involved with us on this frontier. Simultaneously, we have to enhance the efficiency and effectiveness of our public expenditure. There is an urgent need to improve coordination within the federal government and with provinces and reorient expenditure priorities towards social welfare. Towards this end, the government has initiated dialogue with the provinces for sharing expenditures on BISP and PSDP projects falling under the domain of provinces. A review is being conducted to close departments at the federal level for devolved subjects. Options are being explored to shift the large infrastructure projects under the PPP mode, providing sizable savings on budgetary resources for both federal and provincial governments. We are looking at ways to enhance allocation to the viability gap fund for undertaking infrastructure projects in PPP mode. We are also exploring avenues to seek credit guarantees from Infrazamin, which you probably already know, to enhance private sector investment in infrastructure.
Within this whole fold of public sector reforms, we have done soul searching on the state-owned enterprises. So let me touch upon restructuring, loss-making, and even the profitable SOEs if we can manage to do. To address structural weaknesses of SOEs, we have to first focus on improving their efficiency and functioning so that we can reduce the drain on the budgets. It's very tempting to say, let's just get rid of them. But you can't do that in a political system. But more so, nobody wants to take over the sick state-owned enterprises. We are losing about 500 million on account of the top 10 SOEs at the lower end. The government is focused on operationalizing the centralized monitoring unit, and we have already interviewed candidates for it. The CMU will monitor the SOEs and publish regular reports on financial performance and contingent liabilities. We are in the process of finalizing, actually we have already finalized, a state-owned enterprise policy. It's just been signed off by me today under the SOE law as agreed with the IMF. So hopefully we have good news. The focus of the policy is on improving the governance and financial efficiency of the loss-making SOEs. A privatization program has been fast-tracked, and financial advisors for Pakistan International Airlines have been appointed. We are working with IFC team on concessionaire and management contracts for discourse. There are other smaller entities that are also where the process is underway. We are working on operationalization of the sovereign wealth fund, for which the legal framework had been left behind by the outgoing government. The holding company will help us fast-track privatization of the most strategic assets of ours through several modalities and arrangements. This sovereign wealth fund has been operationalized. It's chaired by the Prime Minister of Pakistan, and it includes some of us from the government. Let me touch upon another vulnerability that we have, but to point out that we have to ultimately make our debt sustainable. Pakistan's debt has become unsustainable, and we have been in breach of our Fiscal and Debt Limitation Act since 2013. The cost of servicing the existing debt has skyrocketed, as I mentioned. Managing the public debt will require significant focus on reforms to enhance resource mobilization and contain unproductive expenditures, including the SOE losses, with particular focus on energy sector. The debt structure presents numerous complexities to be worked out between Pakistan and its creditors. With limited buffers, moderate shocks could make debt further unsustainable. Any communication around debt issues needs to be extremely carefully and be very well managed, because Pakistan has no intention of trying to delay our payments. Premature public discussion will of course create many problems, and given Pakistan's debt composition would complicate matters and engagement with multiple creditors. So what are we doing? One, we have started, as I said earlier, home-driven domestic reprofiling, which is in the hands of the government.
With limited buffers, moderate shocks could make debt unsustainable. In this regard, we are working on different strategies to improve the maturity profile of our existing domestic debt, reducing the short-term repayments. On the other hand, we are trying to reduce the cost of government. निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी है। एलामिया के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। इजाफी सरचार्ज से कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी गई है। सैफुर रहमान ने ज्वाइन किया है। सर बताइए डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, नेपरा ने एक फैसला जारी किया है जिसमें ₹1.52 फी यूनिट कराची के जो सार्फिन हैं उन पर 1 साल के लिए, यानी कि वो 1 साल तक ₹1.52 सरचार्ज जो बिल देते हैं उसके अलावा हर यूनिट के ऊपर वो अदा करते रहेंगे। ये एक दरख्वास्त थी वफाकी हुकूमत की, इसमें ये कहा गया था कि कराची के सार्फिन से कुछ वसूलियां नहीं हुई थी पिछले 3 सालों में, तो ये रकम है जो कराची के सार्फिन से वसूल करनी है। तो ये जो रकम है आज नेपरा ने फैसला जारी किया है, वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। इसमें यह कहा गया है कि कराची के सार्फिन से दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक ₹1.52 फी यूनिट के हिसाब से वसूलियां की जाएं। तो मजमूरी तौर पर ये रकम जो बनेगी वो 24.5 अरब रुपए कराची के सार्फिन को अजाफी अदा करने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। मोने सिलाई को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से राबता किया है। FIA ने इंटरपोल हुकाम से राबते किए हैं और मोने सिलाई के खिलाफ तमाम न्यूज़ आजम मलिक ने ज्वाइन किया। आजम इस पेशरफ से मुताल्लिक बताइए। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर मोना सिलाई को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज कर दिया गया है। उनको वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत ने इंटरपोल से राब्ता किया है। FIA ने इस सिलसिले में इंटरपोल हुकाम से राब्ते किए हैं। मोना सिलाई के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की गई है। इंटरपोल से मोना सिलाई की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़राए वफाकी हुकूमत ने बताया कि माजी में मतलूब मुजरमों की पाकिस्तान हवालगी की इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। ज़राए ने यह भी बताया कि मोना सिलाई की प्रॉपर्टीज को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मोना सिलाई ने अपने मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ रुपए निकलवाए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुए। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि निगरान सूबाई हुकूमत ने मोना सिलाई के हवाले से वो डाटा जो वफाकी हुकूमत ने उनसे मांगा था वो FIA के हवाले कर दिया गया है और अब जल्द ही इस सिलसिले में कानूनी अमल का आगाज कर दिया गया है और जल्द ही इस सिलसिले में कानूनी अमल का आगाज कर दिया। बहुत शुक्रिया आजम मलिक। हैदराबाद में बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की डकैती का केस है। डकैती में बिल्डर के 3 मुलाजिम ही मुलजमान के सहूलतकार निकले हैं। SSP का बताना है तीनों मुलाजमीन को गुज़श्ता रोज हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख ने ज्वाइन किया। इस वारदात से मुताल्लिक बताइए तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? देखिए, SSP हैदराबाद अमृत शेख से जो हमारी गुफ्तगू उनका ये कहना था कि इस वारों को पूरा सुराग लगा लिया गया है। वो 3 जो मुलाजमीन थे जो बिल्डर अशोक कुमार के, उनसे तफ्तीश की गई है। उस तफ्तीश की रोशनी में इनको एक बार तकरीबन को 3 मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी की छापे मारी जा रही है। ये वाक़ इस तरह हुआ था कि 2 रोज कबल जो हैदराबाद के बिल्डर है अशोक कुमार, उन्होंने मुख्तलिफ 2 बैंकों से 5 करोड़ रुपए की रकम निकलवा कर इनको कराची जाना था और उनके जो मुलाजमीन थे 3 मुलाजमीन ने मिली भगत करके इसको एक साजिश तैयार की। उसके बाद उन्होंने एक वादा का ड्रामा रचा है। ड्रामा रचाने के बाद अब ये मजीद पुलिस ने 3 बंदों को गिरफ्तार तो कर लिया। अलबत्ता रिकवरी का सबसे बड़ा मसला है जो अब तक रिकवरी मम्मा बनी हुई है और अमृत शेख का ये कहना था कि हम मुलजमान के करीब पहुंच गए, वो छापे मारे जा रहे हैं। अनकरीब 10 से 8 घंटे के दौरान जो है हम इस डकैती की जो रकम है उसको रिकवर भी कर लेंगे डकैती की। बहुत शुक्रिया हामिद शेख।
पीटीआई रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। जज एंटी करप्शन अदालत बाबर अली का असद कैसर को 80,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। दानियाल अजीज ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल बताइए। जी बिल्कुल, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन के मुताबिक असद कैसर पर गजू खान मेडिकल कॉलेज में सामान खरीदने पर खुद बुत का जो है उस पर इल्जाम है कि उसने उसमें करप्शन किया है। पेशावर के एंटी करप्शन अदालत में आज उनकी जमानत के दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज बाबर अली ने समाअत की और उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो मंजूर हो गई और अदालत ने असद कैसर को 80,000 रुपए के मुचलके जमा करने का हुक्म दे दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल अजीज। लाहौर से पीटीआई के पंजाब असम्बली के 2 उम्मीदवार और टिकट होल्डर अब्दुल करीम खान और खालिद घुरकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शेखुपुरा से पीटीआई के एमपीए के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद इकबाल, ननकाना साहब से पीटीआई के एनए 111 और पीपी 132 के उम्मीदवार तारिक महमूद बाजवा और कसूर से पीटीआई के एनए 131 के उम्मीदवार नदीम हारून ने भी पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। अब्दुल करीम खान का कहना है कि वो मुल्क में मुस्बत सियासत की रविश को कायम रखना चाहते हैं जो कि पीटीआई में रहकर नहीं कायम रखी जा सकती, लिहाजा उन्होंने पीटीआई को मुस्तकिल तौर पर खैर बात कह दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दूध के बादल में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बनाए हमको, हम और ग्लूकोमेट के साथ बढ़ो। लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। दिन हो या रात, अब मेरी स्किन रहे ग्लोइंग हमेशा, क्योंकि आई हैव निसा कोलेजन बूस्टर जो रिवाइव करे आपकी स्किन को डे बाय डे। निसा's एक्सक्लूसिव रीजनरेटिव फॉर्मूला जो आपकी कोलेजन लेवल को बूस्ट करे, जो बनाए आपकी स्किन को स्मूदर, फर्मर एंड स्पॉटलेस। अब रहो यंग एंड ब्राइट हमेशा विद निसा कोलेजन बूस्टर। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ। अब हर नजर आप पर। Upgrade का no more wait. Ideas लाया Great Friday sale with flat 40% off from 23rd to 26th. Great Friday sale with flat 40% off from 23rd to 26th November on all items. Head to your nearest outlet or visit gulahmadshop.com. अजूबा ब्यूटी क्रीम फाइट करे अगेंस्ट सिद्धि डलनेस। अब जाओ ग्लो से भी आगे। अजूबा ब्यूटी क्रीम। अरीना गोल्ड ब्यूटी क्रीम जल्द को नरिश और पॉलिश करे। My Miracle Glow। डायल करो *408# और पाओ हर 200 या 200 से जायद के रिचार्ज पर फुल बैलेंस विद जैज़ सुपर 4G। मॉम, शादी तो मैंने पाकिस्तान में ही करनी है, लेकिन फैमिली में नहीं। उसकी फैमिली में? दोनों की। अम्मा आप समझाएं ना। मैं क्या समझाऊं? सही तो कह रहे हैं। You need to give them some options। अम्मा यहाँ बैठ के वहाँ के ऑप्शन कैसे ला सकते हैं? मेरे पास है ना ऑप्शंस। उस्मा नदीम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम कराची। सना, डॉक्टर है दिल की, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम बर्मिंघम। अम्मा ये सब कुछ आपके पास कहाँ से आया? लगता है तुम लोगों को ये ऐप के बारे कुछ पता नहीं है। ओल्ड स्कूल हो थोड़े। ये देखो, शादी के लिए रिश्तों की ऐप। वक्त बदल रहा है तो क्यों ना रिश्ते ढूंढने के तरीके भी बदलें। दिल का रिश्ता, जहां सिर्फ एक क्लिक पर आपको मिलेंगे 140 ममालिक से 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों के रिश्ते। दिल का रिश्ता, नई सोच, नए रिश्ते। Upgrade का no more wait. Ideas लाया Great Friday sale with flat 40% off from 23rd to 26th November on all items. Head to your nearest outlet or visit gulahmadshop.com. चाय के चाहने वालों के अंदाज कई और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल, हमारी नेशनैलिटी। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आओ। मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले, फिर काटे, फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी
नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, एक घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। Geo News Half-hourly clock is brought to you by पाकिस्तान की पहली 24 कैरेट क्रीम ब्लीच and रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ 150 रुपए में। and मुमकिन बनाए 60 मन से भी ज्यादा पैदावार। चाहिए जब कुछ एक्स्ट्रा तो फाइंड दिस एक्स्ट्रा। चेहरे पे बिखरी मुस्कुराहटें खोने ना दे, हर एक लम्हे को नरमी से थाम ले। रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ 150 रुपए में। सन क्रॉप ग्रुप की फाइंडस एक्स्ट्रा जो गंदम की फसल से दुम्बी सिट्टी, जंगली जई और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों का जड़ से सफाया करे और मुमकिन बनाए 60 मन से भी ज्यादा पैदावार। चाहिए जब कुछ एक्स्ट्रा तो फाइंडस एक्स्ट्रा। दूध के बादल में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बनाए हमको, हम और ग्लूकोमा के साथ बढ़ो। मुश्किल में डट के तू जिया, मौसम की शिद्दत और लंबे रास्तों की सख्ती जब आड़े आए तो सिर्फ रूबिया DIR की प्रो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ही इंजन को